गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग या सॉरी गुड आफ्टरनून हो चुका है दोस्तों। वैसे कैसे हैं आप सब? सितंबर 2 सैटरडे, आप सभी को पता है आज कौन सा मैच है। पूरी क्रिकेट जगत की नज़रें दोस्तों आज के मैच के ऊपर है। गेम 2 ऑफ द 2023 एशिया कप इन पालेकेले, जहां पे अफसोस की बात है कि बारिश के चांसेस काफ़ी हैं। इट वॉज 91% व्हेन आई चेक द लास्ट टाइम। हो सके अच्छी खबर आए पालेकेले से और बारिश थोड़ी रुक जाए। आई डोंट थिंक वी गोना गेट अ फुल 50-50 ओवर मैच, पर जो भी ये मुकाबला ज़रूर होगा आज, जो मैं सुन रहा हूँ वहाँ से, जो लोग जुड़े हैं वहाँ से। बट व्हाट डू थिंक? इंडिया पाकिस्तान, 4 साल हो गए दोस्तों कि ये दो टीम्स वनडे फॉर्मेट में मिले। द लास्ट टाइम was the 2019 World Cup match, Old Trafford, Manchester, packed house, Indian fans, Pakistan fans, blue green। रोहित शर्मा ने उस दिन 100 मारा था, कुलदीप यादव ने उस दिन बाबर आजम को आउट किया था। 4 साल हो गए दोस्तों, बल्कि 4 साल से ज़्यादा हो गए कि ये दो टीम्स वनडे मैच में एक साथ खेले हैं। उस बीच 4 बार ये T20 आए फॉर्मेट में मिले हैं। T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, इट्स 2-2 टू इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 मैच इंडिया के, 2 मैच पाकिस्तान के। लेकिन 4 साल के बाद जो एक वेट है, जो इंतज़ार हम लोगों ने किया है इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, वो आज ख़त्म होगा। लेट्स होप फॉर अ फुल मैच। पहला कमेंट आया है क्रिकेट से, सर भुवी को तो हमने हटा दिया, शामी को कब हटाएंगे और कितनी वर्ल्ड कप? भुवी का देखो पेस तो कम था। मैं दोबारा ये कहूँगा आपके लिए, आपने शायद मेरा वीडियो मिस किया था। मोहम्मद शामी 2 साल से बाहर थे वनडे फॉर्मेट से, लेकिन पिछले साल 2022 के लिए जो उनका योगदान था गुजरात टाइटंस पर टू विन द टाइटल, ही टुक अ लॉट ऑफ विकेट्स फॉर देम लास्ट ईयर। उस बेसिस पर, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर थोड़े डाउट्स थे, तो उनको वापस लाया गया था पिछले साल इंग्लैंड टूर के लिए। वहां पे उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग करी। फिर उस इंग्लैंड टूर में दोस्तों बुमराह इंजर्ड हो गए और वो 1 साल तक बाहर रहे वनडे फॉर्मेट से। इस बीच क्योंकि उनको एक सीनियर बॉलर की जरूरत थी, क्योंकि भुवी तो खत्म हो चुके थे, आपने कहा उनको हटाया गया था, तो वनडे फॉर्मेट से भुवी बाहर थे और T20 फॉर्मेट में वो अपने आखिरी पैर पे वो चल रहे थे। तो मोहम्मद शामी को जो चांसेस मिले वनडे में 2 साल के बाद, वो सिर्फ आए थे क्योंकि टीम को एक अनुभवी बॉलर की जरूरत थी इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह। आई गेट द लॉजिक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टार्ट करेंगे आज का मैच, बल्कि मैं कहता हूँ कि जब बुमराह और सिराज हैं तो वो नहीं है। पर येस, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे हिसाब से शामी को जब आपने 2 साल से बाहर किया था, जितनी भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी हो पिछले 11 मैचेस में 14-15 विकेट उन्होंने लिए हैं, ही इज़ नॉट अ बॉलर फॉर द फ्यूचर। वो एक स्टॉप गैप ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने विकेट्स लिए हैं उस बीच बुमराह की गैर हाजिरी में। टीम थिंक्स दे नीड समवन विद एक्सपीरियंस, बट माई पॉइंट इज, जब सिराज हैं, जब बुमराह हैं, जब शार्दुल हैं, और जब कम से कम 2 स्पिनर तो आप खिलाएंगे, इफ नॉट 3, तो शामी की जगह बनती है। आई डोंट थिंक सो। जो भी हो, मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड कप के बाद BCCI मोहम्मद शामी को वनडे क्रिकेट में चांसेस देगी। जस्ट माई थॉट। क्रिक मेनियक इज बैक। गुड टू हैव यू बैक माई फ्रेंड। हाउ आर यू डूइंग? वेल, बारिश के बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्यों हम इतना नेगेटिव रहें। लेट्स टॉक अबाउट द मैच। पाकिस्तान नंबर 1 रैंक टीम, इंडिया नंबर 3 रैंक टीम, दोनों ने 12 मैच खेले हैं। 9 मैच इंडियन टीम जीत चुकी है, 9 मैच पाकिस्तान जीत चुकी है। 19-20 का फ़र्क है, एक नंबर 1 है, एक नंबर 3 है। India, of course, beat Sri Lanka at home, beat New Zealand at home, lost to Australia at home, and then struggled to beat the West Indies in the West Indies इस साल। Pakistan played 2 series against New Zealand at home, won 1, lost 1, and then beat Afghanistan, and now they have, एक सेकंड, मेरे बेटे आए हैं, क्या बात है, ये देखो उन्होंने ड्राइंग किया है स्पाइडरमैन का, बहुत बड़े फैन है स्पाइडरमैन का, वेरी नाइस, वेल डन। आता हूँ लाइव करके। तो हाँ दोस्तों, 5 पे कौन खेलेगा? मेरे हिसाब से ईशान किशन खेलेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली टीम हार्दिक पांड्या को 5 पे खिलाएगी, बिकॉज ही इज अ फिनिशर। ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या का बल्ला आजकल कुछ खास बोल रहा है, ईशान किशन के मुकाबले में उनका बल्ला नहीं बोल रहा है। पर आई थिंक आई वुड लाइक टू सी ईशान किशन जस्ट टू गेट अ लेफ्टी इन द टॉप 5, बट प्रॉब्ली द टीम विल बैट हिम एट नंबर 6। आई डोंट थिंक ईशान किशन इज गोइंग टू ओपन, क्योंकि जब आपके सबसे सफल बल्लेबाज पाकिस्तान के अगेंस्ट रोहित शर्मा, विराट कोहली है, तो आप चाहेंगे कि वो ज़्यादा गेंदें खेले, वो मैक्सिमम प्रेशर वो ही लें। तो नंबर 1 रोहित, नंबर 2 शुभमन गिल, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 श्रेयस अय्यर। Prasidh Krishna offers more than Shami. Oh, I agree. I think you might have seen my shows. I've been saying that Prasidh Krishna is a bowler. 14 matches, 25 wickets.
After 14 matches, if you keep a 14 match cutoff in the history of Indian cricket, only one bowler has taken more than 25 wickets. That is Ajit Agarkar in 1997. In his debut season, after 14 matches, he had 31 wickets or 32 wickets. Prasidh Krishna, after 14 ODIs, has 25 wickets. But he's been away for a year. In his absence, in Bumrah's absence, Shami has been given a chance. I don't think it would be fair to suddenly say, Shami, get lost and play Prasidh Krishna. Shami has been a senior bowler. He's filled the role pretty decently in the absence of Bumrah and Prasidh Krishna. इसलिए मेरा मानना है कि आज दोनों में से कोई नहीं खेलेगा. But whenever the time comes to pick somebody else apart from Bumrah, I think Nepal match में Bumrah को rest करना चाहिए था because he's playing his first one day in over a year. अब तक उन्होंने सिर्फ T20I खेले. क्या Bumrah 10 ओवर डाल पाएंगे? I don't know. It's anyone's guess. I would love to see Prasidh Krishna slot back and play a lot more one-day cricket in the years to come. But my gut feel is, given Shami's seniority, given the fact that he did a pretty good job in the absence of Bumrah and Prasidh Krishna, that he would probably get a couple more matches. Do you think the pitch will turn? Well, if this is the same pitch as we saw in the Bangladesh-Sri Lanka match, and it's going to be slow, it's going to be low, 250 could be a winning score, and if it's going to be that kind of a pitch, you're not going to see India play a third fast bowler. That means कि शार्दुल ठाकुर के बदले अक्षर पटेल को टीम आज लेगी. ये मेरा मानना है. Yes, Ronak Patel, it's absolutely madness. And the thing is, it's not about 22 lakhs. There are no tickets available. By the time the BCCI, the state boards, by the time they get all their tickets, the obligation tickets, the VIP, the passes, once they get out of the way, you're looking at, 10,000, 12,000 tickets available to the public. So imagine, like I said on a couple of my earlier live streams, अगर आप मेरा पहला वर्ल्ड कप कवरेज प्लान देखें और आज का वर्ल्ड कप प्लान देखें, जो मैंने कल फाइनली जब आईसीसी ने वर्ल्ड कप मीडिया अक्रेडिटेशन विंडो खोला, जो मैंने मैचेस टिक किए, इट्स डाउन टू लाइक 8-9 मैचेस. आई हैड टू बिकॉज ऑफ दिस एक्सॉर्बिटेंट रेट्स. फॉरगेट द होटल रेट्स. होटल तो क्या, मुझे होटल की जरूरत नहीं है. मैं कहीं ना कहीं दोस्तों या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैं कहीं रह सकता हूँ. Airbnb, but Airbnb has gone through the roof. The flight tickets for me to get to Ahmedabad is costing 25,000 rupees. So, because of this delay by the ICC and the BCCI in announcing the schedule, in giving the media, हम लोग को मीडिया का, हम जो मैच चुनते हैं, it's taken them so long. I've had to ditch Ahmedabad, I've had to ditch Kolkata, I've had to ditch Lucknow, I've had to ditch Dharamshala, and I might have to ditch Bangalore. Right now I'm doing matches in Delhi because I live here, and I'll be doing matches in Bombay because I have free accommodation there. It's just too expensive. तो आप लोग परेशान हो, हम जैसे freelancer journalists भी परेशान है. बड़ा बड़ा गंदा सीन है. This is why I reiterate my point कि in the history of World Cups, this is the worst planned, worst executed World Cup I've ever seen. Akshar in ODI as a bowler is not justified. No, he is justified because you see, in these kind of pitches, if the pitch is the same as what we saw against Bangladesh and Sri Lanka, spinners are bowling 4 overs for 10 runs. On that kind of pitch, you need Akshar Patel. Akshar Patel is the kind of bowler, unlike a pace bowler, you don't look up to see कि ऊपर के conditions कैसे हैं. Akshar Patel के case में you look down at the pitch. If the pitch is anywhere near like the previous one, then it's a straight thing. Then you don't need Shardul Thakur. You don't need a fourth pace bowler. Then you need another spinner. Akshar Patel against Pakistan will bowl 10 overs, give 40 runs. Variation nahi hai, but tough वो पिट्ठू वाली line डालेंगे. He'll probably get 1 for 38, 1 for 40. In these conditions, he's gold. So I think Akshar Patel is a very, very good bowler. हाँ, वो बहुत similar है to Jadeja. बहुत लोग कहेंगे कि Jadeja और अक्षर एक ही 11 में नहीं बनते, और मैं इस बात से सहमत हूं. लेकिन कंडीशंस के बेसिस पर, जब स्लो लो पिच में कुछ नहीं है, बॉल रुक रही है, that's when you need a bowler like Akshar Patel. Otherwise, he doesn't play many matches. I get your point. चलिए, और कौन सवाल लेके आया है? 5 पे कौन खेलेगा मैं तो बोल चुका हूं. बाकी बहुत कम सवाल आए हैं. शायद आप लोग भी आज कहीं और बिजी हैं. अगर ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो मैं स्ट्रीम बंद ही कर दूंगा, बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी फॉर माय 1:30 शो. यू कैन जॉइन मी ऑन द Raposo ऐप. डाउनलोड द Raposo ऐप. Very, very simple, free of charge. 1:30 every day I do a live stream there. Kiran is back after a long time. Kiran, how are you, my friend? Rohit said his average dropped because he was playing high risk cricket in last 3-4 years. Yeah, listen, frankly, रोहित शर्मा की बात ये है मेरे हिसाब से, आजकल वो जो कहते हैं मैं यहाँ से निकाल के
यहाँ से डाल के यहाँ निकालता हूँ. His comments are contradictory. वो कुछ कहते हैं, कुछ और करते हैं. Don't take Rohit Sharma's statements very seriously. I agree with Crick Maniac. He was batting the same way. He's not changed his batting. That kind of batting got him 500s in the 2019 World Cup. I don't see any much change in him, and I don't think, like you're saying, any change now. ये इनका आखिरी साल है as a white ball and test player. I don't think he'll last much longer in one day cricket. He wants to win the World Cup. Rohit, I would not change things right now. You're a white ball beast. You're a white ball legend. Go out on a high. SS98 is back as always with his 11. रोहित, गिल, विराट, श्रेयस, ईशान, हार्दिक, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, बुमराह. मेरा भी यही है. अगर जो कंडीशंस वाकई में गीले होते हैं, अगर बारिश के बहुत चांसेस हैं, तो अक्षर के बदले मैं शार्दुल को खिलाऊंगा. Like I was just telling another viewer here, if it's sticky, if it's dry, if it's the same pitch as Afghanistan, Bangladesh, then out goes Shardul and in comes Akshar. Boom boom 5 wicket. उम्मीद करते हैं boom boom जरूर 5 विकेट लेंगे. Since Babar has never scored big against India, that's right, 5 matches, 3 40s, no 50. Who should be the biggest threat for India other than him? I would say Shadab Khan and Iftikhar Ahmed. Iftikhar Ahmed, अगर उनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नेपाल की तरह आके धूम धूम करके 100 मारेंगे. I would think he's a big threat because he's a kind of we saw it, in one of the T20Is in the Asia Cup. He just came and got 31 off 15-16 balls. मेरे हिसाब से वो सबसे डेंजर है. If they were in search of bowling all-rounder number, then why does Shardul not play an Oz series? Gill का अब real test है. Because they had Shardul Thakur. Shardul Thakur was around, but that time, like we've seen with Rohit and Rahul Dravid, they made so many experiments, so many changes. At that point, they did not see him viable. I've been saying, I think Shardul Thakur should be playing a lot more one-day cricket. He's a very valuable bowler. लोग उनके ऊपर मजाक उड़ाते हैं social media पे, but look at his stats. Forget the runs. He's a wicket taker, and on these 2 pace pitches, if he gets his cutters right, that kind of pace, that kind of slow pace can be very, very handy. और सबसे बड़ी बात है कि he is a batsman who can give you runs. If India don't play him, if India don't play Akshar Patel, they play 4 bowlers. That means the batting ends at Ravindra Jadeja at number 7. Are you telling me कि इस ज़माने में 2023 we saw it in the West Indies, you cannot play 4 specialist bowlers. Chahal cannot bat, Kuldeep cannot bat, Bumrah cannot bat, Shami cannot bat. They can get you 9-10 runs, but because you need that all-rounder at number 8, this is why I believe Shardul should be played every single time. He did not play every single match against Australia that time because they were trying other players. They were shuffling the middle order up and down also. It's because whenever you lose a key player, and they've been without Pant, without Bumrah, without Iyer and without Rahul for the longest time. In players के absence में inevitably the balance gets biggered. Had the balance not been biggered, had Hardik Pandya been in prime form, then you would not have this problem with number 8. And I fully believe in the lead up to the World Cup, they need to try to get Shardul Thakur the maximum matches. Because come the World Cup, you will depend much more on Shardul Thakur than you will on Akshar Patel. Hello Pawan. Ishan a weakling in the team? Absolutely. Ishan Kishan only makes your 11 if he's opening. But when you have Rohit, when you have Shubman Gill, you're not going to be there. He's only there because KL Rahul is injured. Otherwise, he would not even be in our discussions. Do you think today is the least important India versus Pakistan match, considering we will play them at least 3 times in the next few months? No, I don't think you can ever say any India-Pakistan match, Dhruv, is the least important because they don't play each other. This is the first one day they're playing in 4 years. It's a massive tournament. India needs to win this tournament to restore the faith of their fans. Pakistan need to win this tournament to go into the World Cup on a high. They're ranked number 1. Yes, when you meet in the league stage and you meet in the Super Fours and the final, the significance of the match changes because then becomes a knockout. But when you come to India-Pakistan, there's no least important. Every single match will be on the same keel. Seeing PAK bowling in over conditions, I have no faith in our batting lineup except Kohli. Yes, I get it, but Pakistan's collective, this bowling attack has hardly played India. And I think that might be a very, very crucial factor. What about Sanju Samson? Is he underrated? No, I would say Sanju Samson is overrated.
He's been given enough chances in the T20I format and he's never convinced. So I have said it before, I don't want to see Sanju Samson ever play a T20I again. I still think he can have a lot to offer, a lot of value in the one-day format because his numbers are good. Some people will say that he's just stat padding, he scores against weaker teams. I don't buy that. Compare his middle order stats to Suryakumar Yadav's, and there's a gulf. There's a gulf of a gap. But yes, Sanju Samson is a bit too inconsistent. He's the only traveling member of India's Asia Cup squad जो कि मुझे बताता है मधुकर कि कहीं ना कहीं टीम को लग रहा है कि शायद केएल राहुल पूरी तरह से फिट नहीं होंगे. So Sanju Samson could be an outside chance for the World Cup if KL Rahul is not fit. Fakhar Zaman or Babar, hands down. Babar. Fakhar Zaman is not in any good form these days. तिलक वर्मा को क्या फायदा रखने का स्क्वाड में जब स्काई की जगह. बिल्कुल, ये तो मैंने पूरा शो किया था परसों. मैंने कहा था कि जब स्काई के 26 वनडे को आप उठाकर देखें तो उनके सारे 26 के 26 वनडे मैच तब आए जब कोई मेन फर्स्ट चॉइस प्लेयर इंजर्ड है या रेस्टेड है. लोग अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए कि खुद इंडियन टीम सूर्यकुमार यादव को फर्स्ट चॉइस वनडे प्लेयर नहीं समझते हैं. तो जब उनकी जगह नहीं बनती है तो तिलक वर्मा को आपने क्यों लिया, वो भी 5 T20I के बेसिस पर. अगर आपके मन में डाउट है, यानी कि बीसीसीआई और टीम के मन में डाउट है कि श्रेयस अय्यर अभी तक पूरी तरह फिट नहीं है, फिर तिलक वर्मा का चांस मैं समझता हूं. बट या, स्ट्रेंज वन. शुभजीत, वेलकम बैक. Keen to see whether Rohit again fails to his weakness against left armers. It's a tricky one, man. This is one of the first matches. I was telling my wife yesterday कि it's one of the first India-Pakistan matches where I do not ना होता ना कभी-कभी एक गट फील आती है कि हाँ आज ये टीम जीतेगी. लाइक 2021 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसी चैनल पर मैंने वीडियो किया था कि hands down India winning because I got a feeling. I was wrong. India got smashed, by what 10 wickets. पर अभी इस मैच को देखे मुझे क्लियर विनर नजर नहीं आ रहा है बिकॉज इंडिया हैव प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान आर नंबर 1 बट आई वुडंट कॉल देम अ वेरी dominant one day team. So I'm not seeing a very, very clear winner, my friend. I think the team batting first will have an advantage. Pawan, it's an interesting one. कल मेरी बहस हो रही थी एक लाइव शो पे किसी के साथ, दोस्त के साथ, तो वो कह रहे थे कि in these conditions you want to chase. I don't know, rain or no rain, I just feel in a match of this importance you just want to bat first. So I want to say batting first. Yeah. मैंने अभी ज्वाइन किया. जहीं भाई, वेदर रिपोर्ट क्या है? वेल, फिलहाल बारिश के आसार नहीं है, लेकिन बारिश आने वाली है 2 बजे और टॉस कब है? 2:30 बजे. तो टॉस से पहले बहुत बारिश आने वाली है. 91% इज द अपडेट. फिलहाल बारिश नहीं हो रही है तेज वहां पे, बट मेरे हिसाब से 100 ओवर तो नहीं होंगे आज. तन्मय इज बैक. आई नो दिस वोंट हैपन बट आई वुड हैव प्रेफर्ड गिल एट 5. इट्स योर व्यू. आई respect it, but Shubman Gill has been your best one-day batsman in the last 1 year. He scored a lot of runs last year. He scored a lot of runs this year. Yes, majority of those runs came in India, but you have told someone that you are going to open for the next 10 years. Why for one match, just to accommodate Ishan Kishan, would you put him down the middle order? He's not batted at 5. He's a banaya opener. He's going through a lean phase, but he's got 720 runs and an average of over 100 in 1 days this year. So he's still your best batsman, and all those runs, double hundreds, centuries, 85 not out, it's all come from opening. So why for one match just because you want a lefty? मेरे हिसाब से I know ईशान किशन के opening stats बहुत बेहतरीन है, but a 200 came against Bangladesh, and in my mind, Ishan Kishan, more than Rohit, more than Shubman Gill, he's a walking wicket against Naseem Shah and Shaheen Afridi. He's technically nowhere as good as Rohit and Shubman Gill. Just my view, Ishan Kishan against Naseem Shah, against Shaheen Afridi, he's a walking wicket despite being a lefty. So again, I see your point. His job will be done. 35 odd runs, but I just don't see him of a class of batsman who can see out the opening spell from these two bowlers. Bowlers का matchup है. जी हाँ अनूप, best bowling today will decide the winner due to overcast conditions. अगर वाकई में उतनी बारिश पड़ती है जो हम समझते हैं, हाँ, लेकिन एक होता है ऊपर देखना, एक होता है नीचे देखना. अगर ये वही पिच है जहां पे परसों का मैच हुआ था, जहां पे रुक रुक के थक के मर के आ रही थी, then you might see it's which team plays the extra spinner. Will India drop Shardul and play Akshar? Would Pakistan bring in another spin bowling option? So it's a tricky one. Yes, रेन का फोरकास्ट है, बारिश के बहुत चांस है, ओवरकास्ट है, लेकिन अगर इतनी गीली पिच नहीं होती है तब
आपको एक स्पिनर की जरूरत पड़ेगी. और as good as the bowling will be, it's how good the batsmen countered that. Bangladesh were very, very poor against Sri Lanka. Sri Lanka struggled against Bangladesh, but they had a small enough target for them to go chase it. SKK saying, India win the match. We hope so. Monroe's back after a long time. Off the wicket, movement with pace will decide which bowling is better. Yes, if it's a damp, overcast day and everything is wet, if the rain stays away and we get the same kind of pitch, which we saw in the Bangladesh Sri Lanka match, then your pacers, then the slower pacers, the pacers who can take a little bit of pace off, they might be more handy. But on that kind of track, it's going to be Shadab, Jadeja, Kuldeep. They'll be running through the opposition. Gill should come good now, high time. Bilkul, high time. Too good a batsman. India's leading run getter, the international leading run getter of the year, but he needs to come back after 2 months of pretty poor batting. Weather will support at least 25 overs. I hope so. Most online predictions are rated to Candy and not Pallekele. ठीक है. I mean, I was looking at my friend Vimal's channel and बारिश तो काफी आने वाली है वहाँ पे. What would be par score if it's the same pitch? 260? CJ? 260? Yeah. If India wins the toss and Rohit chooses to field, if Rohit Sharma chooses to field, India are going to struggle to win the match. You need to bat first. Put out the fact that Shaheen Afridi ने आपको एक T20 मैच में बिगाड़ दिया. इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी आपके खिलाफ एक ही वनडे मैच खेले, 6 ओवर 42 रन बिना कोई विकेट. शादाब खान इससे पहले 5 मैच 4 विकेट. फहीम अशरफ 1 विकेट. हारिस राव आपसे अब तक खेले नहीं है. So don't get caught in by what Pakistan has been doing against Nepal and against Afghanistan. Right now, look at the fact that Haris Rauf has never played you in a one-day match. Naseem Shah has never played you in a one-day match. Of Pakistan's current bowling lineup, no one has done well against India. मानता हूँ 4 साल हो गए पिछले one-day match में. But I would rather they use that psychological advantage rather than saying, oh no yaar, we don't want to go out there overcast conditions, we don't want to face Shaheen. Shaheen can have a bad day, Shaheen can have a terrific day. Back your skills, back Rohit Sharma. You have 3 double hundreds. Shubman Gill's got a double hundred this year. Virat Kohli's got thousands of runs. Back that and bat first. I would be very, very disappointed and a bit angry if Rohit Sharma chooses to field. It would not be, like you said, that killer instinct. वेल दोस्तों, और कोई सवाल है नहीं तो हम बंद करते हैं. अगेन आई रिमाइंड यू 1:30 1:30 बजे रपोसो ऐप पर आप मेरे साथ द ऑल्टरनेट व्यू विद जेमी लाइव क्रिकेट पॉडकास्ट पे जुड़ सकते हैं. उसके बाद मैं क्रिकेट नेक्स्ट पे आऊँगा 2 बजे आई बी ऑन न्यूज़ 9 लाइव प्रीव्यूइंग द मैच विथ माई वाइफ मेहा एंड माई कॉलीग चेतन नरूला. और शाम को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मैच के बीच, इनिंग्स के बीच, और मैच के बाद क्रिकेट नेक्स्ट YouTube channel पर. Will Kuldeep play a crucial role? He will play a crucial role whether India bats first or bowls first. He is India's premier white ball bowler. Babar Azam struggles against him. He's going to be India's prime bowler today, my gut feel. Pandya the bowler could be handy. Pandya the bowler could be handy if he can get up to 6-7 overs. I'm very keen to see कि हार्दिक पांड्या कहाँ डालते हैं और कितने ओवर डालते हैं. Playing Akshay, बिल्कुल Shardul Thakur is my first choice bowler, but if the rain stays away for the first half of the match, and Anup, if it's the same pitch as we saw in the previous match, Sri Lanka, Bangladesh, where the spinners were making batting very difficult, batsmen का जीना मुश्किल कर दिया, उस किस्म के pitch पर, I think Akshay Patel will be played by Rohit and Dravid. Jai bhai, Kishan's spin game is also a bit questionable. Very, very. He eats too many dot balls. Number 5 is risky. Again, exactly. This is why I'm thinking the team would probably prefer Hardik Pandya. Hardik Pandya is a far better batsman. Hardik Pandya has batted at 5 and 6 a lot more than Ishan Kishan. So again, I said just for the lefty factor, I would like to see Kishan give some variety at 5, but the team will probably bat him at 6, just like you, Tanmay, have raised. Anyway, dosto, thank you for joining. Have a great Saturday. Let's hope India can beat Pakistan. Let's hope we get a full match. Exactly. Hope India team will not play like the fear of losing. I don't think so, Vivek. I think the time has come for a more positive approach. Thank you all for joining me. Love you all. Have a great day. I will see you tomorrow with my post-match review. Take care. Jai Hind.